अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हया फातिमा इकबाल है और ये है फुलब्राइट वुमेन पॉडकास्ट। हमारी आज की गेस्ट हैं आयजा हुसैन। आयजा हैज़ अ मास्टर्स इन सोशल साइंसेज विद अ फोकस ऑन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो and she is the CEO of the Saari Girl. Aiza, I'm so excited to be talking to you because you you work on my favorite kind of attire. Thank you so much join No, करने के लिए और टाइम thank निकाल। you so much for having me. Thank you. I'm really excited to be here and to have this conversation with you. थैंक यू सो मच आयदा। आयदा, मुझे आप सबसे पहले तो ये बताएं कि भाई आप अमेरिका गई फुलब्राइट प्रोग्राम पे और आप कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के आई। मुझे आप ये बताएं कि अगर ब्रीफली एक्चुअली एक सिंपल अल्फाज में अगर आप हमें समझाना चाहें कि भाई Mm, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है mm, और mm, और एज पाकिस्तानीज हमें फिक्र भी क्यों करनी चाहिए कल्चरल mm, एंथ्रोपोलॉजी की, तो आप क्या कहेंगे? mm. Okay, so basically, brief terms में अगर इसको कहें तो it's a study of human culture, like how we are, the way we are, what shapes us as humans. जो हमारी मतलब जो पर्सनालिटी है वो इस तरह की चीज है कि we're not born with it. Likewise जो सोसाइटी है हमारे इर्द गिर्द वो बस स्टैग्नेंट नहीं होती, उसको हम शेप कर रहे होते हैं, वो हमें शेप कर रही होती है। तो ये जो टू वे रिलेशनशिप है जिसके अंदर हमारा ट्रेडिशन आ जाता है, हमारी वैल्यूज आ जाती हैं, हमारी नॉर्म्स आ जाती हैं, ये कहाँ से आती हैं, ये क्यों होती हैं और ये हमें कैसे बनाती हैं, हम इनको कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई फील लाइक एज पाकिस्तानीज इट्स इवन मोर क्रूशियल फॉर अस टू जस्ट be aware of first of all our society because एक इसमें we are a people that I mean there's a lot of diversity that the country has to offer, but at the same time हमें एक मेरा ओपिनियन ये है कि हमें लगता है कि हमारी एक homogeneous identity है हम्म। at the same time. But if you look closely, हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारे सब कल्चर्स हैं, बहुत सारी छोटे 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 डिफरेंट किस्म की एथनिसिटीज हैं, रिलीजन्स हैं, और उन सबको समझने के लिए लोगों को एक ही रिलीजन के अंदर एक दूसरे इंसान को समझने के लिए एक शहर में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि जो कि शुरू से उधर हैं, बिफोर पार्टीशन भी वहां रह रहे हों, कुछ लोग हैं जो माइग्रेट करके आए हैं। अब एक दूसरे को एक साथ हार्मनी में रहने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहने के लिए, इसके लिए कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बहुत ज़रूरी है। And given the kind of issues that trouble our country, and what we're trying to overcome, just forming trust in between people and not just focusing on difference, but also focusing on similarity. That's where cultural anthropology comes in. It really helps you draw connections between different communities and just see, how you can entwine with one another and understand each other better. क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे बात करते हैं या एक नेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो ये एक सवाल होता है ना कि व्हाट इज पाकिस्तानी कल्चर, राइट? और फिर जिस तरह Mm, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमने जिंदगी भर वो वाले टैबलोज में पार्ट भी लिया है और वो देखे नहीं है जिसमें एक सिंधी होता है, एक बलोच होता है, एक नहीं, और अक्सर गलत कपड़े भी पहने हुए होते हैं, और बलोच और पख्तून ने तो बिल्कुल ही स्वैप किया हुआ होता है और किसी को नहीं पता होता कि वो गलती भी हो रही है। नहीं मतलब एक हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर को फिर काफी ज्यादा एक डिस्टिंक्ट है ना, कि जैसे हमें एक ही बॉक्स में होना चाहिए एंड दैट्स हाउ वी शुड पैकेज uh, इनटू द वर्ल्ड, इट सीम्स। yeah. या दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। मुझे तो एक्चुअली इस एग्जांपल से याद है, स्कूल में ना जब यही आता था कि वो बलोच, ये इतने हमारे प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस का जी नेशनल ड्रेस ये है, लिटरली स्टिकर्स भी मिलते होते थे कि हमें समझ नहीं आती थी क्या क्या, तो हम स्टिकर बाजार से खरीद के लगा दिया कि अच्छा भी आइडेंटिटी सबकी ये है। पंजाबी, सो आई एम पंजाबी, सो वो होता था जी कि ठीक है पंजाबी। स्कूल में बाकी 20 लोग क्लास के पंजाबी हैं, एक बेचारा कोई पश्तून निकलेगा या दो निकल आएंगे और बाकी कोई और कुछ निकल आएगा। सो वो उस तरह से कल्चरल अंडरस्टैंडिंग हमारी टेक्स्ट बुक से ले लें या हमारी अपनी इंटरेक्शन से ले लें, वो you don't really get to learn that way. So subjects such as these, they really open your eyes and sensitize you to what really makes you the way you are, what shapes others around you, and आपके आपकी immediate दुनिया से निकल कर भी एक दुनिया है। तो अगर सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी, अनलेस आई थिंक अगर आप एक शहर में, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एग्जाम्पल, कि जब तक मैं मतलब लाहौर में अगर थी
मुझे नहीं पता था, इस्लामाबाद जाके मुझे और डिफरेंट तरह के लोग नजर आए। हम्म। फिर इस्लामाबाद से आप आगे आप नॉर्थ जाते हो, फिर आपको आपको नजर आता है कि अच्छा जबान चेंज हो रही है, अच्छा लोगों की द वे दे लुक दैट्स चेंजिंग। ओके, सो टू अंडरस्टैंड you know all these changes and the nuances in culture, subjects such as cultural anthropology, sociology, history, all these are really important. um so yeah. अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि एज समवन जिसने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, हमारी जो एक बेसिक आइडिया ऑफ कल्चर होता है वो ये होता है कि कोई लोग जो हैं वो अक्सर क्या ज़बान बोलते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं, मे बी किस तरह का हाँ म्यूजिक बजाते हैं, राइट? तो ये एक हाँ आम शख्स जो है जब कल्चर सोचता है तो उसके जहन में ये चंद चीजें आती हैं, मे बी डांस की, जी हाँ फलानी जगह का रिवायती रक्स ये है या और फलानी जगह का ये है, या लेकिन आम, आ, वो और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो सब भी कल्चर होता है, लेकिन हमें आई थिंक हम सेंसिटाइज नहीं होते उसकी तरफ ज्यादा, लाइक व्हाट ऑल makes up culture apart from these big few things that we learn in our course books and we see. या कोर्स बुक में जैसे हम कल्चर करते तो कहते कि ओ आर्ट, आर्ट में कोई पेंटिंग हो गई, म्यूजिक हो गया, फिल्म हो गई, दिस इज ऑल कल्चर, बट कल्चर इज लिटरली everything around us. I mean, the way, like, the way you are dressed, the way you speak, who you interact with, how you interact with them. आपके जो एक अनसेट किस्म के रूल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके जो आम एक नॉर्म्स घर में जी, आने जाने का टाइम ये है, इकट्ठे बैठने का तरीका ये है, बड़ों ने खाना पहले लेना है, छोटों का मतलब आपकी अम्मी किचन में है, अब्बू काम पे हैं, इस तरह के हर चीज जो बेसिकली आपके इर्द गिर्द है, जो एक आप कह लें सोसाइटी का निजाम बनाया गया है, वो सारा कल्चर का हिस्सा है। सो उसके अंदर तो हर चीज, लाइक फ्रॉम मीडिया, मीडिया के अंदर किस किस्म का मीडिया है, हम तक क्या पहुंच रहा है, हम क्या अब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम किस वक्त देख रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं, I ऑल ऑफ दिस इज कल्चर। रिलीजन, फिर हम रिलीजन पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो भी स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, घर में पढ़ते हैं, कौन पढ़ाता है, इट्स ऑल कल्चर। I see. So I mean, it really is just the very bedrock of society. Um, हमें हमें शेप करता है कल्चर इन ऑल वेज, इन मोर वेज दैट वी कैन थिंक ऑफ इट। मैं मुझे याद है जब मैं ethnography is basically again it's the technique that's used in Mhm. anthropology and also a few other social sciences, and उसके अंदर it's like a study technique। तो मैं ethnography करने जब निकलती थी तो उसमें माय प्रोफेसर बुलाया कि तुमने सब कुछ ऑब्जर्व करना है, लाइक एक Mhm. मक्खी भी उड़ के जा रही हो तो भाई वो उस इलाके में मक्खियां कम है, ज्यादा है, क्यों है, क्या है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर स्टडी। ओहो। सो हाँ। सो लिटरली हाँ। हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है सही है, फिर बच्चे खेल रहे हैं, अच्छा इस टाइम पर बच्चे खेल रहे हैं, वेट दे नॉट, दैट मींस दे नॉट इन स्कूल। Okay, why are they not in school? Is there a school nearby? So you see, one question leads to another, leads to a third, and then that really helps you understand कि ये जिस तरह से ये सिस्टम बना हुआ है ये ऐसे क्यों है इंटरेस्टिंग। और और आप कब से है। और आप नेसेसरली आप ये नहीं कह रहे कि ये कोई ये कर रहा है तो ये गलत कर रहा है, या कोई ये कर रहा है तो ठीक कर रहा है, आप ये देख रहे वैल्यू हैं कि जजमेंट नहीं है, बिल्कुल भी हाँ, वैल्यू जजमेंट नहीं है। आप ये पढ़ रहे नहीं। हैं कि क्यों हो ये लोग ऐसी या चीज क्यों करते हैं, या फलाने लोग, फलानी कम्युनिटी ऐसी क्यों करती है। सो लुक्स लाइक एनीवन हु जिसको ऑब्जर्व करने का शौक हो, जिसको आई थिंक इंसान इंसान इंटरेस्टिंग लगते हो, उसके लिए ये फील्ड परहैप्स एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, राइट? मतलब मैं ये इसी भी पूछ रही हूँ क्योंकि आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसे लोग भी सुन सकते हैं जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो, लेकिन शायद उन स्टूडेंट्स को अभी ये ना पता हो कि जिस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है वो शायद कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, उसको शायद ये कहते हैं। या तो आई थिंक दिस डिस्क्रिप्शन हेल्प्स पीपल। या एंड देन उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि अच्छा आप लोगों ने लिटरली मेरे साथ अब एंथ्रोपोलॉजी के अंदर a lot of ideas come to people's heads कि what is anthropology, कि ये do you study like cavemen and archaeology, and even though studying cavemen and archaeology is perfectly fine, but is it just that, तुम लोग अप्लाई कैसे करते हो इसको, पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है। तो इस तरह के सवाल भी बहुत ज्यादा उठते हैं कि ये लोगों को आपने समझ लिया, पढ़ लिया, तो फिर इससे क्या। एंड आई वुड से दैट लोगों को समझ लिया, पढ़ लिया,
तो इसी से है सब इसी कुछ, से तो लाइक इसी से तो राइट, लाइक आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाएं तो आपकी रेलेवेंस है, आप एमएनसीज में जाएं आपकी रेलेवेंस है, बिकॉज लाइक व्हाट आर मार्केट स्टडीज, व्हाट आर लाइक, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कहीं बनाना है, कुछ कहीं एग्जीक्यूट करना है, वहां की कम्युनिटी स्टडी आप पहले करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे, तो ही वहां से आगे मतलब निकलेंगे ना. And actually the start of anthropology is very problematic because anthropology colonization के टाइम से मतलब स्टार्ट हुआ है, and उस टाइम पर it was used to study कि वहाँ के locals के क्या तौर तरीके हैं, हम उनमें घुस गए, उनको कैसे समझ कर, लाइक उनको कॉलोनाइज कैसे किया जा उनको सकता है सिविलाइज बेसिक, कैसे करें. उनको हाँ. सिविलाइज हम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी just establish our rule over them. इंटरेस्टिंग. So it, I mean, not to say that हम उस time पर वापस जाएं, but just to जी हाँ. understand the राइट. relevance of anthropology and how useful it can be in बिल्कुल. in pretty much any domain. और आई थिंक उसके फंक्शनल प्रॉपर्टीज तो ये हैं ही कि भाई आप अगर आपको किसी जगह पे मार्केटिंग करनी है, कोई प्रोडक्ट बेचनी है, कोई काम शुरू करना है तो है. बट आई थिंक इवन अगर आप एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के लिए अच्छा दोस्त बनना चाहते हैं तो भी शायद आपको आपके आप मतलब it makes you a better person because you're okay with Yeah, different people doing different things, unless they're harming each other yeah, or something. But yeah, आप थोड़े से चिल शख्स भी हो सकते हैं शायद कि भाई yeah, फलाने का ये कल्चर है और फलाने इस चीज को ऐसे करते हैं. एंड मतलब आपको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स शायद थोड़ा कम होगा yeah. शायद इस फील्ड को पढ़कर. Like you learn to step out of your comfort zone, your bubble, and just see people for who they are, and हाँ. just appreciate like difference जरूर हो, मगर उस difference में भी आपको ना अपने साथ किसी ना किसी तरह से linkage आप निकाल लेते हो. राइट. So I went on an exchange program during my undergrad. I went to Turkey, और मुझे वहां भी, अब लोग सारे कहते हैं कि हाँ टर्किश पाकिस्तानी बड़ा चीजें सिमिलर हैं, फिर कुछ कहते हैं बहुत डिफरेंट है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है. But I think for me, linguistics भी cultural anthropology के अंदर से, I would just not to say कि मुझे कोई बहुत ज़बानें आती हैं, कुछ ऐसा ठीक है. कुछ भी नहीं है. But मुझे बस सिर्फ and this is prior to the time of Ertugrul, उसकी सारी fame और Turkish shows बहुत ज़्यादा नहीं थे इतने सही है. उस टाइम पर. तो छोटी छोटी चीजों पर like I would be visiting a friend, और उसके भी घर वालों को नहीं अंग्रेजी बोलनी आती थी. तो हम जब कम्युनिकेट भी करते थे तो हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, साइन लैंग्वेज हो रही है, थोड़े से वर्ड्स उन्होंने शोरबा चोरबा बोला, which is basically soup, and I was like, wait, so that sounds like shorba. And then so like charab, like wait, you mean jarab, like sock? हाँ. So हाँ. like very small things के हाँ. घर के अंदर you just even if you just like listening, हम्म. तो आपकी वो वाली चीज को एंथ्रोपोलॉजी काफी होन करता है कि अंडरस्टैंड. just humbles you to just listen, to observe, and just to appreciate हाँ. different cultures, and then see how you can kind of connect with them. Right. And I think So one of the yeah. best humbling experiences can be like, especially for a young person, can be to realize that दुनिया में सिर्फ आप ही नहीं है और आपके जैसे लोग हैं. हाँ, दुनिया में हाँ, बहुत लोग हैं और आप बेस्ट नहीं है उनमें से नेसेसरली, राइट. लाइक तो बिल्कुल. ये बताएं कि अ, पाकिस्तान में, साउथ एशिया में, अम, आपकी नज़र में लिबास की, एटायर की, जो हम्म, कपड़े हम पहनते हैं उनकी उनकी आपको क्या अहमियत नजर आती है, लाइक एज समवन फ्रॉम दिस हम्म, रीजन बट ऑल्सो एज समवन हु हैज हम्म, who runs a business and who studies this field हम्म, in our daily lives, in on our special days. आपको क्या नजर आता है कि हमारी जो एक हम्म. do you think like we are particularly close to like just attire as a concept and then as a practice as people? I definitely think that we are close to attire, individually and as a community also. सबसे पहली चीज आप यू नो अब सोसाइटी जिस तरह की है, सबसे पहली चीज वो है लोगों का एक लिबास चेक करते हैं, खासकर औरतों का लिबास. This can go into a different direction, but I'll try to just keep it to saris. और उसमें यही होता है कि हमारी जो एक पहचान है वो हमारे सबसे इमीडिएटली लिबास के थ्रू आती है. ठीक है. तो
मतलब कि इवन अगर आप अभी हम ये स्टिकर्स वाली जो बात कर रहे थे, और स्कूल में बलोच पश्तून, तो हम में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि साउथ एशियन लोगों का, जी साउथ एशियन पाकिस्तानी एंड मोस्ट ऑफ अस, ठीक है, मुस्लिम, उनका लिबास इस तरह का होना चाहिए। अब हमारे लिबास में जहां तक मुझे याद बता, आई रिमेम्बर व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, आपको नूर जहां, यू वुड लुक एट different icons, national icons, and you would see, okay, they used to wear saris. You'd look at the military uniform, you'd look at artists like Noor Jahan, you'd look at even Fatma Jinnah for that matter, and you'd see them dressed in saris. फिर आप I mean, during the time that I was growing up, and in Lahore and Karachi is a different scenario altogether. It's more diverse in that sense. Saris इतनी कॉमन नहीं थी, ठीक है, एंड हमें भी इर्द गिर्द एक नेशनल लिबास का जब सोचा जाता था तो हमेशा एक शलवार कमीज, हमारा लिबास जी शलवार कमीज है। साड़ीज तो ज्यादा एक इंडियन लिबास है। साड़ीज को रिलीजन भी हमने एक तरह से उन पर थोप किया दावा था कि जी ये तो हमारा लिबास है ही नहीं, ये तो हम है ही नहीं, हाँ है ही नहीं। और पार्टीशन के बाद आप एक तरह से, नॉट कि ये पार्टीशन के बाद कोई रूल सेट हो गया कि हमने ये ले लेना है, आपने ये ले लेना है, दैट ठीक है कुछ चीजों में था, बट लिबास के अंदर जो हथियारों है में था, नहीं था। मतलब हथियार वगैरह में हाँ था, कपड़ों हाँ, ठीक है, में। कपड़ों पर तो नहीं था, कपड़ों पर तो नहीं था। तो उसके बाद फिर certain regimes, military regimes came into practice, and थोड़ा सा औरत के लिबास पर काफी ज्यादा एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगी, ठीक है। और फिर साड़ी इस सब चीज के अंदर, द साड़ी रियली बोर अ रियली हैवी ब्रंट, बिकॉज साड़ीज आपको मीडिया के ऊपर उस तरह से नजर नहीं आती थी। साड़ीज आपको एक तरह से रिबेलियस इकबाल बानो का ड्यूरिंग ड्यूरिंग ज़ियाद regime, सो इकबाल बानो का जो अलहमरा में when she sang Faiz Ahmed Faiz's work, she was wearing a black sari. So sari was also seen as a symbol of rebellion. कि अच्छा साड़ीज तो इस तरह से पहनी जाती हैं। और फिर खैर तो like if I look back and if I look at even like my grandmothers have worn sarees, so much so that my nani was like, she's been a huge साड़ी enthusiast. उन्होंने अपनी जवानी में इतनी साड़ीज पहनी है कि उन्होंने कहा मतलब अपने हनीमून पर भी मैंने सारी जगह ना मैंने तो साड़ी पहनी। And she's like, okay, and I was like, okay, that sounds cool कि मैं पता नहीं कहाँ कहाँ गई, मैं तो रोम में भी मैंने साड़ी पहनी। मैंने कहा ठीक है, What sounds a cool. sight it must have been though. Amazing. What a sight, right, right. Stunning. But then I look at my mother's generation, and उन्होंने साड़ियाँ, it's like a whole generation skipped out, साड़ी नहीं पहनी, ठीक है। एंड ये वही टाइम के ग्रोइंग अप इन 80s 70s 80s पाकिस्तान, उस टाइम पर इतना ज्यादा साड़ीज का नहीं था। तो मेरे मेरे पर जब अब आते हैं साड़ी गर्ल के ऊपर के, मुझे भी आई वाज लाइक इन यूनिवर्सिटी 4th ईयर, और अब ट्रेडिशन जहाँ तक सेट था कि लोग चलो मोस्ट वलीमों पर साड़ी पहन रहे थे, या सबसे पहला आपका एक अवेकनिंग साड़ी के साथ होती है कि आपके स्कूल कॉलेज के जो फेयरवेल्स होते हैं उन पर आप साड़ी और पहनते हो। साड़ी हमेशा आपको उस वक्त पहननी होती है जब आपके साथ कोई 36 और औरतें पहन रही हो ना, समहाउ लाइक ये फैसला नहीं कर सकती एक औरत कि मैंने आज साड़ी पहनी है। मतलब वो एक ग्रुप का होता है कि तुम पहनोगी, तुम पहनोगी, तुम पहनोगी, एंड देन हाँ, सम एंड सॉलिडारिटी देन कि अंदर हम सब साड़ी, अच्छा ठीक है हम साड़ी पहनेंगे। अकेले साथ साड़ी पहनने में एक तो अगेन वी कैन ऑल्सो कम टू दैट लेटर, बट वो ऑलमोस्ट एक लाइक, कॉन्फिडेंस हाँ, एंड ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंस नहीं है कि as यू if स्टैंड it's आउट some, टू मच। yeah, like as if it's some form of trouble making or almost like some crime के बाकी सब मिल के मॉब में करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ, राइट, सो कि या, वो ये कि पता नहीं कि अगर भाई है मैं अकेली सिर्फ मैंने साड़ी पहनी होगी तो नहीं सही लगेगा, लाइक इसमें क्या है जो नहीं सही लगेगा। और वो क्या है मतलब जो ज्यादा लोग पहन के सही हो जाएगा, जो अगर वैसे सही नहीं है तो। yeah, it doesn't make sense. So खैर मेरा भी ये साड़ी गर्ल जो था वो that started in 2019, लम्स का ये आखिरी साल था, बट उससे बस साड़ी का मेरा पर्सनली जो इंटरेक्शन रहा है वो यही है कि बचपन में तो वो ये कि एज अ लॉट ऑफ अस हैव के वो नानी दादी की कोई साड़ी के साथ आपको एक फॉन्डनेस होती है। फिर उसके अलावा छोटे होते हैं आप दुपट्टों को पकड़कर साड़ियाँ, लपेट तो उस तरह लपेट के, से कोई हाँ। नहीं पहनता, दुपट्टों को लपेट लपेट कर आप जी को इंडियन सोप ऑपरा को आप जी कॉपी करना शुरू हो जाते हो। बट या सो ओ लेवल्स के टाइम पर भी दैट वाज व्हेन आई फर्स्ट वोर साड़ी फेयरवेल पर, मुझे याद है तब भी स्टेरियोटाइप्स बहुत ज्यादा अटैच थी
कि अब आप सोचे 15-16 साल की लड़कियां हैं एंड के साड़ी में तो यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉडी और फिगर ऐसा होना चाहिए, पेट नजर आता है तो पेट को तो अंदर होना चाहिए है। साड़ी के साथ पता नहीं अब बन बनाएंगे तो बहुत ही आंटी टाइप लोग आती है। साड़ी के साथ ये वाला फैब्रिक तो सूट ही नहीं करता, बहुत बल्कि लगते हैं। अब दीज आर ऑल, आई मीन लेट्स जस्ट पॉज एंड थिंक। हम कोई सलवार कमीज पहने तो हम ये शायद इस तरह की चीजें नहीं सोचेंगे 10 दफा के okay, we need to go on a crash diet to wear a shalwar kameez. That sounds ridiculous, right? But people will be doing that कि नहीं साड़ी तो मैं पतली होंगी तो फिर मैं पहनूंगी। या फिर मेरी अम्मी तो there were people who didn't wear sarees कि मेरी अम्मी कहती है शादी के बाद साड़ी पहननी है। और फिर सोचें कि apply that to सलवार कमीज and say कि मेरी अम्मी कहती है शादी के बाद सलवार, like हाँ it doesn't make sense, right? हाँ like तो हाँ, ये हम एक मतलब साड़ी के मैरिटल साथ ऐसा स्टेटस जुल्म, कैसे, हाँ कैसे कनेक्टेड है एक कपड़े से। it doesn't add up. But बहरहाल, and it's not like कि ये कोई narratives both sides of the border पे exist करते हैं या साउथ एशिया में ये कब से चलते आ रहे हैं। The sari has been around for centuries. You trace it back to the Indus Valley civilization. Literally आप वो figurines को देखें तो उनकी भी drapery के साथ historians have said that that symbolizes the first kind of sari. So it's been around in the subcontinent. ये हमारी एक पहचान है और हमने इसके साथ पता नहीं क्या जुल्म किया। As in, when I say hum, I don't mean all South Asians, I mean Pakistani specifically. राइट। तो अब होता ये था कि ओ लेवल्स में ठीक है पहन ली साड़ी, ए लेवल्स में भी ठीक है पहन ली साड़ी। अब साड़ी भी जब पहनी तो मेरी याद है पहली मेरी साड़ी जो थी वो ओ लेवल्स में थी एंड आई बोरोड अ कजन साड़ी एंड आई वोर इट एंड बिकॉज ख्याल ये था कि साड़ी पता नहीं दोबारा कब पहनी जाएगी, साड़ी तो है भी ऊपर इतनी महंगी, तो मैं बना लूं और पहनूं ही ना बाद में। तो उस टाइम पे 15-16 साल की उम्र में तो यही ख्याल थे। बट जब फेयरवेल का टाइम आया फॉर यूनिवर्सिटी लम्स का 4th ईयर, तो ठीक है फेयरवेल के लिए तो साड़ी बना रहे थे एंड इट वाज जहां भी जाते थे कि ये बाजी तो इतने की 15,000 20,000 से साड़ियां शुरू थी एंड दिस इज 2019। एंड सिर्फ आप अभी फैब्रिक ले रहे हो साड़ी का तो वो इतने का पड़ रहा है, उसके ऊपर आपने उसको कुछ डाई कराना है, स्टिच कराना है, लाइनिंग खरीदनी है, सब कुछ करना है। उस साड़ी के भी कोई 4-5 कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि लवाजमात आपने होते उसको हैं पूरा, मतलब। जी उनको आपने ना सारा कुछ स्टिच कराना होता है। और स्पेशली अगर आपको साड़ी पहनने की आदत नहीं है, उस टाइम पर मुझे नहीं थी। But there was another dinner at that time, and that was like a smaller scale, and it was just like for the high achievers for at LUMS. तो उस पर a few friends and I we were just thinking कि हम क्या पहने। फिर हमने कहा कि ओ हम सारी सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी की वजह से हम साड़ी पहनते हैं। अब हमने ये रिमार्केबल आइडिया तो हमारे पास आ गया, बट हमें समझ ना आई कि हम साड़ी एक तो हम फेयरवेल के लिए बना रहे थे इतनी महंगी, फिर हम एक और साड़ी बनाएं और वो हमें कोई फेयरवेल लेवल लाइक एक्सपेंसिव भी नहीं चाहिए थी और इतनी ज्यादा फैंसी भी नहीं चाहिए थी। वी बट वांटेड हाई लाइक अ डिनर अचीवर्स का वेयर डिनर भी साड़ी। था तो मतलब थोड़ा हाई एक्स्ट्रा अचीवर्स का डिनर था, थोड़ा सा लाइक बस एक फॉर्मल साड़ी हो, कोई काम शाम वाली नहीं चाहिए थी, बस एक अच्छी साड़ी, ठीक है। सो राइट। अब उस टाइम पर ना कोई ये आजकल तो a lot of brands have started their sari lines also and you're seeing sarees in many spaces. ये चीज आज से 4 साल पहले, चार नहीं अब तो ऑलमोस्ट 4.5 2024, so 2019 में ये नहीं थी। एंड वी वर जस्ट ब्राउजिंग द इंटरनेट, कोई पाकिस्तान में एक एक्सक्लूसिव साड़ी स्टोर उस तरह से ऑनलाइन नहीं था। हम जिन दुकानों में जाते थे हमें जो था वहाँ साड़ीज बहुत ओवर प्राइस थी। फिर हम जब सर्चेस करना शुरू किए तो हमें क्रॉस द बॉर्डर हमें साड़ियाँ नजर आई। हमने कहा कि दीज आर लाइक what like 1/6 1/10 the price, what, and there the variety is insane, the patterns are like amazing, the fabrics के अंदर भी इतनी कुछ है। तो ये समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में क्यों नहीं है और कैसे नहीं है। तो वो जो था that landed me into like a series of questions कि okay where has sari gone and why is it that like fine industry is on, okay fine India is larger ठीक and है। जो भी है सारा इकोनॉमी सब कुछ है, बट ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में कपड़ा नहीं बनता या अगर कपड़ा बनता है तो वो इतना महंगा बन रहा है, क्यों नहीं साड़ी अवेलेबल। So I really like went deep down into it, like into a rabbit hole, and I stepped out into local markets. I started, you can say, like sort of like a survey कि साड़ी कहाँ है कैसे है क्या। So I made my way towards local vendors, and that's how I started the Saari Girl. मैंने शुरू में कुछ साड़ीज अपने लिए ली, कुछ साड़ीज बनवाई, कुछ साड़ीज मैंने फेसबुक पे मैंने पोस्ट किया
किस तरह से हैं कि affordable sarees, and I woke up to like 50-60 messages overnight, literally overnight. And this is तरसे हुए मैंने लोग कहा अच्छा, औरतें पाकिस्तान की। जैसे भी कि या we want affordable sarees, oh my gosh इतनी अच्छी हैं, ये में मिलती नहीं है, फलाना ये वो। वाह। और अब उस टाइम पर आई अब फेयरवेल डिनर वगैरह सारा कुछ गुजर गया, हो गया। दोस्तों को भी साड़ियाँ शुरू से अपने लिए किया, दोस्तों के लिए किया साड़ीज का। फिर मेरी फैमिली ने ही मुझे आइडिया दिया, माय अंकल, माय आंट, माय मॉम, लाइक कि तुम अभी तुमने ग्रेजुएशन हुई है, आई वाज डूइंग सम रिसर्च वर्क, फिर तुम एक साड़ीज का ऑनलाइन कुछ स्टार्ट कर लो। वाह भाई तो मैंने जबरदस्त। कभी नहीं सोचा था, मैंने हाँ कहा अच्छा मतलब हाँ चलो करके, आई लव द ड्रेस, क्लियरली पीपल वांट इट, एंड देन हाँ। देयर इज जस्ट लाइक आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन द हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस। चलो ठीक है। तो आई स्टार्टेड, पहले तो फेसबुक पर एक पायलट समझ लें किया, कि पोस्ट लगाए वो पीपल वुड रीच आउट। देन दिसंबर में 2019 आई मेड अ इंस्टाग्राम पेज एंड आई जस्ट स्टार्टेड, आई वाज लाइक चलो फ्री टाइम में मैं इस पर लगा लिया करूंगी और सब कुछ। फिर कोविड आ गया 2020 में, एंड मेरा जो रिसर्च का काम था, आई वाज वर्किंग एट लम्स, आई वाज वर्किंग एट अनदर रिसर्च organization called Ideas. I was doing a UN fellowship. I was doing a lot of things together. और वो थोड़ी सी समझ ले सब कुछ एक हॉल्ट पे हो गया, क्योंकि कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, प्राइमरी रिसर्च हो नहीं रही कहीं, या मेरा सारा काम ही उससे लिंक था। मैंने ऑनलाइन, पीपल स्टार्टेड लाइक, एक पाकिस्तान में ट्रेंड भी ज्यादा शुरू हो गया ऑनलाइन चीजें करने का, और उस टाइम पर मैं भी, एवरीबडी वाज जस्ट ऑनलाइन मोर। एनीवे I यार। started the Sari, yeah. So a Sari Girl, first time it really picked up. I put in a lot of time. I spent hours, and it was like a one woman show for a good 1 year. नाइस। So I'd be like everything from like the back end management of हाँ। stocks to posting, editing, conversations with clients, locking orders, um, just sending out orders, post order, like post purchase key queries, like all of that. I was doing that. आयजा मुझे ये बताएं कि जब आप एक तो मुझे क्लासिक जो कमेंडेबल पढ़ाकू बच्चों वाली जो हरकत होती है ना कि आप अपनी ग्रेजुएशन के लिए साड़ी ढूंढ रहे हैं और फिर उसी में रिसर्च में चले गए ना यू वेंट इनटू अ Yeah, रिसर्च रैबिट होल व्हाइल यू वांटेड टू वेयर अ साड़ी फॉर द कॉन्वोकेशन डे yeah, और फॉर द डिनर। yeah, मुझे ये yeah. बताएं आयजा कि टेक अस इनटू the market space, take us into these streets and alleys where you went, to try to look for fabric, whether you were calling Mm, people, whether you were, mm, walking into these places। मुझे आप ये बताएं कि mm, फिर जब आप इस रिसर्च रैबिट होल में गई कि भाई ये mm, साड़ियाँ इतनी महंगी क्यों हैं या अफोर्डेबल साड़ी कहाँ mm, हैं क्यों नहीं है, mm, mm, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको जवाब एक्चुअली क्या मिला? क्योंकि अब मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए फ्रॉम अ वेरी mm, टेक्निकल मार्केट स्टैंड पॉइंट के क्या वाकई कपड़ा महंगा है? क्योंकि कपड़ा है ही महंगा और जब भी हम साड़ी बनाएं तो वो करते 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 महंगी हो जाती है, बट दूसरी तरफ अब आप या आपके जैसे कुछ और लोग भी अफोर्डेबल साड़ीज mm, बेच रहे हैं, राइट? तो मसला mm. कहाँ था, गैप कहाँ था? मतलब क्या मार्केट को ये नहीं पता था कि औरतें तरसी रही हैं इस फैब्रिक के लिए? लाइक वाज देयर वन पर्टिकुलर गैप, मिसिंग लिंक दैट वाज देयर, या कई सारे छोटे 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 गैप्स थे जिनको आप स्ट्रीमलाइन कर पाए आफ्टर योर रिसर्च एंड थ्रू योर वर्क? आई थिंक बहुत सारे छोटे छोटे गैप्स थे। पहले तो ये कि साड़ी एक, अगेन लाइक माय ऑनलाइन मार्केट एंड जस्ट द पीपल इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, हम्म। ये थोड़े डिफरेंट सेगमेंट्स बन ठीक। जाते हैं। हाँ। यूनिवर्सिटी वाले लोग जरूरी नहीं है कि वो साड़ियाँ ढूंढ रहे हों टू वेयर एवरी डे, और ठीक टू है। वेयर अ साड़ी दैट दे कैन जस्ट रीयूज मोर। वो हो सकता है कि एक फैंसी इवेंट के लिए ही देख रहे हो। बिल्कुल अब सही जब है। मार्केट मार्केट स्पेस में अब तब जाते हैं जनरली, जहाँ हम इनिशियली महंगी साड़ियाँ देख रहे थे, हम्म। उसमें यही उनको पता है कि लोगों ने आना है, उन्होंने शादी के लिए साड़ी या कॉलेज फेयरवेल के लिए लेनी है, उनके पास एक बजट है, पैसे और हैं भी उनको हैं उनके यू नो पास, राइट? फाइनेंस, और अगर नहीं भी है तो एक एक चीज बनी है कि साड़ी तो एक महंगी चीज होती है, तो वो उस चीज पर कैपिटलाइज कर सकते हैं। ओके। दूसरी चीज आती है कि अब given the sociological historical background of what the dress has undergone over time, कि इसकी सेंसरशिप भी आई भी है, इसके साथ स्टीरियोटाइप स्टिग्मा बहुत कुछ अटैच्ड है। A lot of places which manufacture sarees
did close down. A lot of our industry, a lot of yeah. So उसमें आप मार्केट प्लेसेस में भी जाते हैं और आप उन्हीं वेंडर्स के पास जो कि 30 साल पहले साड़ियाँ बेच रहे थे, उनके पास जाते हैं, उनके पास साड़ियाँ अब नहीं थी, उनके हम्म। पास और तरह का फैब्रिक था। ठीक है, सो ये चीजें भी थी। फिर आप उससे पीछे जाएं, मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएं, और वहां जहां मैन्युफैक्चर होती थी वहां वो इंडस्ट्री बंद हो गई थी क्योंकि उसकी डिमांड नहीं रही। जारी बात है कि जब आपके पास बीच में इतना बड़ा एक गैप आ जाता है, एक डेकेड पोलिटिसाइजेशन लॉन्ग, हाँ। भी और सब कुछ डेकेड से ज्यादा है, ठीक तो है। वो उसके अंदर द मार्केट हैज टू सर्वाइव। पीपल हु आर इन बिजनेस दे आर गोइंग टू इनोवेट एंड कम अप विद थिंग्स दैट आर सेलिंग। अब चूंकि ट्रेंड्स आई थिंक मतलब मेरी जनरेशन मेरे से ऊपर की थोड़ी सी कुछ साल और ऊपर, थिंग्स have changed. I think society opened up more again, and where media came in with थोड़ी इसके ज़्यादा freedom एक तरह से, and we can debate on this, but राइट। compared to 70s 80s Pakistan. मुझे ऐसा ये Yeah. बताएं कि आपके शिकागो के क्लासरूम में जब आप मास्टर्स कर रही थी, आपके क्लासरूम में या बियॉन्ड द क्लासरूम, आप किस तरह की चीजें सीख रही थी जो आपके पहले के एकेडमिक एक्सपीरियंस से डिफरेंट थी, इनहैंस थी? और क्या आप कुछ ऐसी चीजें भी सीख रही थी जो आपको ज्यादा डीपली सोचने पे मजबूर कर रही थी अबाउट योर ओन बिजनेस एज वेल? आई मीन नॉट इन अ Hmm. मैथ सेंस बट Hmm. लाइक इन द कल्चरल सेंस। Hmm. Okay, so I think सबसे बड़ा डिफरेंस तो मेरे लिए ये था कि आप जिन लोगों का काम पढ़ रहे थे लम्स में बैठकर, मैं प्रोफेसर्स के बारे में कुछ उसने ये चीज पब्लिश की है, I got to study from those professors like हम्म। firsthand. And I got to have an interaction, like a first-hand conversation interaction, like वो मेरा आइडिया सुनते थे, मुझे फीडबैक देते थे, मैं एक तरह से like equal footing तो नहीं, but the way that एक conversation करने की वो space create हो जाती थी क्लासरूम में. um and that was just like remarkable. Abhi bhi, like because I had not been to the States prior to the Fulbright, and वो वही था कि वो एक अलग दुनिया है, ये दुनिया है ही क्या यहाँ, ठीक है। और लोगों के बारे में लोगों का भी बहुत के वहाँ के people have all kinds of perceptions, but again anthropologically भी मुझे था कि this is not what the States is going to look like. I did not go in with any biases or preconceived notions. मैंने कहा कि मैं खुल के मैं इसको खुद से एक्सपीरियंस करूंगी, अपने ठीक है। क्लासरूम को, अपनी यूनिवर्सिटी को, इस like state to state, city to city, neighborhood to neighborhood. I knew that हर जगह differences होंगे, तो वो मेरे लिए बहुत एक like I was just you say like pleasantly surprised, but also at the same time like I just enjoyed the whole experience because हाँ। क्लासरूम के अंदर भी मेरे इर्द गिर्द कोई कैम्ब्रिज का ग्रेजुएट है, कोई एनवायू का ग्रेजुएट है, कोई कौन सी आईवी लीग से आया है, एंड देन आई हैड कम फ्रॉम लम्स, राइट? और वो एक और लाहौर, I'm damn sure like most people would not even be able to put down कि ये कहाँ है exactly on the map. लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, बट उनको अनफॉर्चुनेटली बेसिक जियोग्राफी की कुछ चीजों को नहीं पता होता कि हाँ, ये लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है. यू हैड टू गाइड देम ऑन दोस थिंग्स. मतलब बहुत लोग ऐसे भी होता है कि आपके साथ होते हैं जी आप मिडिल ईस्ट से हैं, वो पाकिस्तान मस्ट बी समवेयर फ्रॉम देयर, सो ये चीजें आई हैड टू कम अक्रॉस. क्लासिक। या क्लासिक के बट मेरे लिए वही था कि confidence wise it was amazing. Conversation wise I was like able to, and then again the lens that I was able to offer from my experience as a South Asian Muslim woman. तो वो एक क्लासरूम के अंदर इनिशियली पहले आपको होता है कि ये बोलूं ना बोलूं, फिर आप बोलते हो, फिर आप लोग कहते हैं कि wow, we hadn't even thought of this, and I'm like, you हाँ like dude, like this is just like really basic for me, like मेरा everyday चीज है ये, how could you हाँ not have thought about this? हाँ हाँ। तो वो चीजें काफी मतलब मेरे लिए एक तरह से रही कि अच्छा हर किसी का वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है, आप उनसे सीखते हो, वो आपसे सीखते हैं, और आप इकट्ठे एक स्पेस में बस सीखने के लिए आए हो. In terms of my courses also, like and if I see कि मैंने वहां से क्या सीखा और मैंने किस तरह से उसको अपने बिजनेस में अप्लाई किया, तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए ऑन मीडिया एंथ्रोपोलॉजी, एंड जस्ट टू सी कि अच्छा आप एक पिक्चर को उसके साथ इंटरेक्ट करते हो, तो आप एक डिजिटाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन आपकी किस तरह से होती है, लाइक हाउ डू यू establish proximity, for example, with a video or with a photo. So what will speak to the viewer more and how?
सो वो तो वो फिर चीज़ें मैंने कहा अच्छा कि आपकी अगर डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो तो वो डिजिटल भी आपके लिए इवन इफ इट्स स्टिल फोटो इट हम्म। विल जस्ट ग्रास्प द व्यूअर मोर. So small things I picked राइट। up on, and I was like, okay, I can put this into my campaigns also. Okay, so राइट। angles can be thought of this way. Okay, so अमेजिंग। मुझे ये भी बताया आयजा yeah. कि अभी आप डिजिटल मीडिया और मीडिया एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रही हैं, and obviously so much of your work now, so much of your work initially flourished because of social media, right? It may have been different platforms. अब शायद इतने सालों में आपको ये भी समझ आई हो कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा ऑडियंस है, किस पे कम है, किस पे श्रिंक हो रही है, किस पे बढ़ रही है, ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। मुझे आप ये बताएं कि सीमिंगली तो ये एक तरह के आउटफिट को सेल करने का बिजनेस है, राइट? बट whenever I go on the Saari Girl page, I also see comments where people are just unhappy with the work that you people are doing. मुझे आप ये Yeah. बताएं कि एक तरफ तो सोशल मीडिया ने obviously literally like your business has come into being because you figure out like the importance of your work through social media क्योंकि लोगों ने Mm, आपसे कनेक्ट किया। अरे सोशल mm. मीडिया वाली स्पेस आपको कितना बॉदर करती है या मे बी कितना अम्यूज करती है जब आपके पास कमेंट्स आते हैं criticizing your work, and Mm, also take us through mm. what are some of the most common kinds of criticisms that you get and what is your usual reaction to them as a human being. Um, so criticism, I would say that will come with any work that we do, and especially in a society like Pakistan, unfortunately, we love to judge and criticize Hmm? others and just pass on value judgments and whatnot. But सारी जिस तरह से जो उसकी हिस्ट्री रही है, जो कुछ स्ट्रेस ने फेस किया है ओवर टाइम, उसके साथ ये है कि हमें वही सुनने को मिलता है कि ये तो इंडियन ड्रेस है, ये हिंदू Hmm. ड्रेस है, ये हो हाय इस तरह का ब्लाउज पहना हुआ है, इस हिजाब के साथ तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, इस ब्लाउज के साथ तो बहुत रिवीलिंग लग रहा है. तो एक हर हाल में जो लोग हैं उन्होंने इसके साथ ना कुछ एक तरह से अपनी क्रिटिसिज्म दी है. Hmm. ठीक है. बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि उन्होंने हमें एंड दैट्स व्हाई वी आर वेयर वी आर वेयर Hmm. यस वी रिसीव क्रिटिसिज्म बट एट द सेम टाइम there's a larger number of people, a much larger number of people who support us and say, "Oh my gosh, thank you. Finally, we have a हाँ. space where we see, हर तरह के लोग हैं. इतनी ज़्यादा variety है sarees की, and you're not charging an arm and a leg. It's like a Hmm. friendly space where we feel comfortable." Hmm. And that's exactly what I wanted my work to be about, and that's exactly what we're pushing for even today. So criticism, हमारा तो इनिशियल रिएक्शन पहले बहुत टाइम पहले मैंने ना लोगों को समझने का कमेंट में क्या शुरू कमेंट किया, फिर उसने कमेंट किया, मैंने कहा ये कमेंट वॉरियरशिप जो स्टार्ट हुई थी है ना, ये थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, तो मैं बहुत फिर उसको टाइम डीएम मैंने कंज्यूमिंग भी है। कहा बहुत टाइम कंज्यूमिंग, एंड व्हेन आई वाज लाइक डूइंग दिस अलोन, सो लिटरली मैंने कहा चलो मैं डीएम में थोड़ा सा समझा देती हूँ कि like dude, like what you're talking doesn't make sense, like right, like मतलब एक ड्रेस है, आप उसके बारे में इतना कैसे. नहीं. So the people, I guess, when they don't want to listen, they don't want to listen. That's a hard lesson that I've learned. हम्म. Another lesson that you can't please everybody, जिनको बस क्रिटिसाइज करना है, और शायद वहाँ कुछ है भी नहीं क्रिटिसाइज करने के लिए, फिर भी वो कुछ ना कुछ निकाल लेंगे उसके अंदर से कोई ना कोई कीड़ा. And that's fine. It sits difficultly with me sometimes because, and it used to, कि क्यों, मतलब there's nothing wrong with this, and there's some like maybe I can improve somewhere, but then I look at the thing and I'm like, okay, like the portrayal is fine. Like if फाइन या somebody is oversized and wearing a sari, uske niche astaghfirullah ha likhna is speaking more about you एग्जैक्टली। than about the हाँ, person, एब्सोल्युटली। right? But और at द the same ब्रांड। time, एब्सोल्युटली। it would be like, wait, the person who's wearing this, उसने already like अपने बारे में they're conscious and they've still done it because they know कि इर्द गिर्द क्या कुछ stereotypes और labels वगैरह एब्सोल्युटली। attached हैं. तो उनको वो पढ़ना, और उनके लिए मैंने कहा कि मेरे से ज्यादा मुझे होता था कि जिस जिसने मतलब या साड़ी वो लिबास पहन कर अपने तस्वीर हमें इजाजत दी हुई है लगाने के लिए, आई राइट। डोंट वांट दैट पर्सन टू गेट टू हर्ट फील और बैड ऑफेंडेड, या टू फील बैड इन एनी वे. हम्म.
So I would try okay, no, okay. फिर मुझे था कि it has a no hate. There's like a no hate policy, zero tolerance for this. ठीक आपने है, बदतमीजी करनी है, आपको हम रिमूव कर देंगे सीधे सीधा सही है। फेस से। हाँ हाँ। क्योंकि इसके बाद तो फिर लाइक एक आराम से तो बात समझ लो, या फिर अपने इस तरह के ऑफेंसिव कमेंट्स आप खुद ही रिफ्रेन कर लो। राइट। तो ये चीजें सुनने को मिलती हैं। और, हम्म। जो लोग हैं फिर वो वही, पर हमारे हमने स्पेस को इस तरह से भी किया हुआ है कि I also spent a lot of time, and this is, I'm going back to the initial years of the business where I would just talk to women inbox में कि कि हमने साड़ी पहनी है, वो बहुत enthusiastic, वो मुझसे ना, जैसे मैं उनकी पता नहीं कोई best friend, it's not a business interaction, it would be more like a friendly interaction कि हाँ, you और guide लाइक अ me, कि मैं मेंटोरशिप। साड़ी पहनने का yeah, literally like a mentor, like you guide me। मुझे साड़ी पहनने का शौक है, मगर मुझ पर सही लगेगी, this is how I look, मेरा रंग ये वाला है, मेरा रंग ऐसा है, लिटरली मुझ पर साड़ी मुझे कहते हैं कि हाँ। अच्छी नहीं लगे ना, I'm like how does that even add up? हम्म। हम्म। सो बहुत भी, मेरा कद बहुत छोटा है, मैं साड़ी पहन लूं, आई हैव ऑलवेज बीन टोल्ड कि मेरी हाइट नहीं है साड़ी वाली, एंड आई बीन हाँ। लाइक नो नो नो। सो अब हाँ। दिल को भी बहुत लगती थी, और अभी भी मैं, आई रिमेम्बर, मुझे लोग भी, वो तस्वीरें भी, बातें भी, सारी उस तरह से काफी विविड है मेरी मेमोरी में। और बस फिर आई वुड स्पेंड आवर्स लिटरली लाइक हाँ। वाह। डीएम्स में। और फिर ऑफ कोर्स एक पॉइंट आया जब मैंने कहा कि अच्छा यार, अब मतलब आई थिंक मुझे भी हाँ। मेंटोरशिप की जरूरत होगी इसके बाद तो। हाँ So हाँ हाँ। I had to then, of course, like delegate and then draw some boundaries. But still, what we do is we open up like a story Q&A, and we're like, ओके। okay, guys, let's talk about नाइस। this today's नाइस। topic. So then it's like Because a community catharsis हाँ, that's because I going mean, on. it's so like, it's not, I would say, like, as a Pakistani woman, it's not surprising, but it's still so revealing, right? कि uh, एक आम औरत पाकिस्तान में उसको क्या क्या बातें बचपन से या अपने टीन एज से समझाई जाती हैं या कही जाती हैं Yeah, उसकी बॉडी के बारे yeah, में, उसकी अपीयरेंस के बारे yeah, में, कि कि literally, like, you need complete outsiders, even strangers on digital platforms, like strangers like you, to kind of yeah, make them think and feel like different and feel better about themselves as well, कि मतलब ये yeah. ideally आपका, Validation, हाँ, external मतलब validation, क्या, आपको उसकी एंड जरूरत। encouragement है कि ये आपका काम आइडियली तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आपका हम्म, काम है, क्योंकि एक, मतलब आप like like how limiting must it be to be surrounded by people who will only tell you something bad about you or like the way you look, कि आपको एक्चुअली हम्म, कहीं और आके हिम्मत ढूंढनी पड़ रही है, वैलिडेशन ढूंढनी पड़ रही है, हम्म, लाइक टू वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट ढूंढने पड़ रहे हैं, एंड देन they हम्म, get it, and then people take off. So it's, I mean, हम्म। it's also like, it makes me feel very like, feel sad actually to listen to this, Yeah, like, it's really sad actually. Like कि ये क्या दुनिया um है यार, आई मीन क्या है ये। मतलब ऐसे, और वो ये बातें नहीं होती कि आपको कोई चौथा बंदा अननोन सा आकर कह रहा हो कि ओ तुम्हें तो पहननी चाहिए, ये आपके करीबी लोग, आपके अपने लोग, पीपल हु लव यू। आपकी माँ, या आपके पीपल हु लव यू, आपकी बहनें, आपकी बेस्ट फ्रेंड्स, वो आपको ये बातें कर रही होती हैं, तो आप फिर आकर हाँ। लाइक एक साड़ी है तो ठीक है, एक साड़ी पेज, बट हम फिर सुनते हैं हम लोगों की बातें, फिर हम कहते हैं कि नहीं, यू लुक ग्रेट, नहीं आपको किस चीज के बारे में, what are you most conscious about, let's walk you ओके। through it, okay? So ओके। fabric अगर आपका, okay, have you ever carried a साड़ी before, okay, तो फिर ये वाला फैब्रिक थोड़ा slippery है, मुश्किल है, इसके अंदर ना जाओ, ओके? सो यू आपको पल्लू किस तरह का चाहिए, अच्छा आपको अगर कुछ लोगों को होता है कि मोस्ट पीपल वांट रियली लंबे पल्लू, कुछ लोगों को होता है कि हमसे कैरी नहीं हुआ जाएगा, सो वी really like help them navigate the whole thing, so it's not as simple हाँ, as hey, I like this t-shirt and give me this shirt in a size बिल्कुल medium. आप। It's more like okay, this color, this fabric, this length, all of this blouse cut. हाँ। So a lot of like हमारा एक तो टाइम लगता है, पर दूसरा एक mental energy राइट। बहुत use होती है in this हाँ work, where we just patiently and guide people, but it's also learn a lot, like for me learn a lot from हाँ। them कि अच्छा आपका करीबी लोग ही वो है कि मेरा हस्बैंड कहता है कि मतलब
पिंक कलर मुझ पर अच्छा नहीं लगता, बट मेरा बहुत दिल है कि मैं ये पिंक साड़ी ले लूं, मैं ले लूं। तो फिर आप ऐसा करें, इसको एक ये ना एड्रेस के नाम के ऊपर ना आप ये वाला नंबर डाल दीजिएगा और ये वाली चीज कर दीजिएगा, लाइक इस तरह से भी कि अच्छा लोगों ने अपने अपने एड्रेसेस पर भी डिलीवर नहीं कराई हुई, आई एम पेइंग फॉर इट, बट डिलीवरी एड्रेस भी मेरी फ्रेंड का है, इससे इस टाइम तक हो, डिलीवर फलाना फलाना फलाना। सो ये सब चीजें भी हम में लाइक आई गेस आई डोंट नो, मे बी बाकी लोगों को भी करनी होती हो, जहाँ कुछ लोग छुप कर पार्सल्स कर रहे हो, बट इसके अंदर इट्स नॉट जस्ट अ रैंडम पार्सल, इट्स लाइक अ ड्रेस दैट कपड़े people around हैं, you have said हाँ that you can't wear or you can't हाँ, carry वाह, properly, so you're just afraid of हाँ, सो getting it all इल्यूमिनेटिंग। together, but at the same time हाँ, अंदर आपका दिल भी कर रहा है। तो अब मेरा एक ले पर्सन क्वेश्चन ये है टू फॉर एनीवन लिसनिंग, for the women who want to drape a sari and for the guys who want to gift a sari to a woman, if someone has never draped a sari, uh, what should be what should be like the basic level that they should start from without Yeah. overcomplicating? क्या इंतखाब किया जाए, क्या चुना जाए, किस तरह से इस पूरे साइंस को समझा जाए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि पूरा फिजिक्स की गेम है साड़ी में, लाइक साइंस इन्वॉल्वड है। सो what are some things that you would you would suggest, that people sort of keep an eye out for? I mean, if it's your first time wearing a sari, I would say that you go for an easier fabric. Um, Not really. People really like आजकल ये जो shamos, solid silk sarees and ombre silk. These are fun, no doubt, but slippery होती है साड़ी। आपका पल्लू, and we might need, if it's your first time, you probably have to pin it up, because it can keep falling. Um, so silk के साथ you have to be a little careful because it's like very slippery. Mhm. बट फिर मुझे जो बहुत पसंद है साड़ियाँ, और मुझे लगता है कि वो बहुत वर्सेटाइल होती है, वो कॉटन सिल्क की साड़ीज Mhm. होती है, because those sarees, I mean, similar to what I'm wearing right now, these are fabrics that are evergreen. These are fabrics that will work for literally engagements, to like dolkis, to dinners, to birthdays, to whatever, to eat. So it's very very wearable in that sense, and it in terms of also just season, it doesn't really know a season, you can wear it whenever। सर्दियों में भी पहनोगे तो you won't be like, oh my god, लॉन का जोड़ा सर्दी में पहन लिया, हाँ how high, हाँ हाँ हाँ, that's not the vibe that it gives, because राइट। it's a cotton silk blend। मेरी एक और जो फेवरेट है वो अजरक साड़ीज हैं, so हम्म, I am like a huge fan, because मुझे होता है कि वो अजरक एक ऐसा फैब्रिक है that it's made on pure cotton, yes, but the technique is such that you can wear it in any season. So you can राइट। wear it with a nice sweater underneath or a coat on top. So again, you can carry the sari. You don't need an occasion to be wearing the sari. You can Yes, wear it whenever. you can wear it to So work these, actually, you like, can wear it to हाँ work, definitely. हाँ You can wear हाँ it to work. हाँ So these kind of sarees, I really, push on that. हाँ। I think buying one of these, it's going to cost you less than हम्म like a जोड़ा these days, जिस तरह से एब्सोल्युटली। हमारी prices जा रही हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि भाई 2024 में कौन से साड़ी ट्रेंड्स हैं जो आपको लगता है कि ये ये हैं इस साल के या इन अगले चंद महीनों में, हम इस तरह की या उस तरह की साड़ी ज्यादा देखने वाले हैं? ऑब्वियसली, आई मीन, completely acknowledging the fact that a sari is never out of fashion, but Yeah. what are some new trends that the sari expert here thinks? I think in terms of sari, but also in terms of general market trends, there's a lot Mhm. of talk about bodily autonomy, about what to do about fast fashion and its impact on our environment, and how we can be more responsible as human beings, and how हमारे पास अगर limited means हैं, हमें उस चीज को या अगर means बहुत ज्यादा भी हैं, तो how should we be responsible with the way that we spend? Mhm. And to me, all of this, like it adds up into making smart choices about, okay, what you consume, and in terms Mhm. of like in consumption, Kendra, of course, it your clothing is one consumption ठीक है। practice as well. So I would say that investing in attire that is timeless,
investing in attire that is something that's not, with the changing, fluctuating trends of the market, fabrics that are consistent, fabrics that you can pass on. तो वो मुझे साड़ी उस तरह से, not to say कि hey मैं साड़ी girl and I am like selling the sari to you, no, but to invest in pieces that you feel like okay, these will not go out of style. That's I think a smart choice to make. So in terms of just trends, एक तो evergreen किस्म की चीजें होती हैं जैसे बनारसी sarees and these cotton silks, these are just there. इसमें आपने वही एक सिंपल हैंडलूम आपका जो बॉर्डर के साथ, बनारस बॉर्डर काम के साथ जो साड़ियां चल रही हैं, वो तो आई थिंक देयर नेवर रियली गोइंग टू गो आउट ऑफ स्टाइल. बट फिर एक मार्केट सीजनल ट्रेंड्स आते हैं थोड़े से, और वो एंड अगेन फॉर सम पीपल दे कैन carry that on forever. But for others, it'd be like, oh wait, XYZ celebrities are wearing these days. Hence, it's in trend. Hence, we should also get it. So उस तरह से फिर silk की shamo silk sarees, ombre sarees. Ombre is a really like trending thing these days. What is ombre? I'm And sorry. like ombre, like multicolored. Oh, So okay, like okay. light green, darker The green, goes Alia on to Bhatt, the Alia black, Bhatt like sari, right? the Alia Bhatt sari. I But see. before that, even Mahira Khan had worn it. A lot of like I see. unlimited kind of Okay, so that's ombre. celebrities. Either if a young Pakistani woman like you wants to start a business, whether it's a business from home, whether it's a business a little bit out of the bounds of the home, what are some things that she can or should watch out for? Are there certain mistakes that someone can avoid? Are there some blunders that you can avoid making if you just think something through? आपकी क्या suggestions होंगी, based on your own experiences? Okay, so based on my own experience, सबसे पहले तो यही सवाल होता है कि अगर बिजनेस शुरू करना है तो वो किस चीज का शुरू करें. एंड इसके अंदर भी कोई करेक्ट आंसर नहीं है. कुछ लोगों को होता है कि बिजनेस जस्ट हैज टू बी अ वे फॉर मी टू मेक मनी एंड दैट्स फाइन. So I will start something that I feel like would sell, even if I'm not very passionate about it. For me, it was the opposite case. I converted what I was passionate about into business. Some people may not agree with that. उनको लगता है उनका passion उस process में मर जाता है, उनको सिर्फ काम करना पड़ता है. But it's been like 4.5 years to this, and I wouldn't say that's the case for me. So you find your avenue. My suggestion would be first you need to kind of see what your aim with the business is. Why do you want to start it in the first place? Then you see the kind of commitment that you think that you can make to it. Are you already like doing 10 things together? Do you think you have room for another thing? Because mainly I think जो एक मेन चीज थी वो ये थी कि जब मैंने साड़ी गर्ल के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, कोविड का टाइम था, so the work that I was already doing, I was still employed, but I didn't have much work because I couldn't step out on the field and do research. तो उस तरह से जब मुझे टाइम बहुत मिला, then I was able to pool that into the Saari Girl and really like develop my brand. So in terms of your time commitment, that's something that I would suggest that you should be careful of. In terms of mistakes, I would say that you can't please everybody, and you should, and I think as women, we often doubt ourselves a lot. We think that, maybe we're not doing our best, or maybe our product is not the best, or, आप लोगों की आपको इतनी आदत होती है इधर उधर से इतनी चीजें सुनने की, you have to grow thicker skin. So I would really recommend that to somebody who's starting off their business, that um, do what feels right for you, take advice, learn from others, but do you. Like at the end of the day, it's your platform, your baby. You can take it any direction you want, and have that faith in yourself. Take the first step, and you don't need to have an exorbitant amount of capital to begin a business. You can start small. I started with myself. कि मुझे पसंद था, मेरे फ्रेंड्स को पसंद था. I started with just posting on Facebook groups and seeing कि उसका कोई आता है response नहीं. But again, Facebook
4 years ago, Facebook now, different algorithms are different. Right. So you may have to test out different strategies to see Hmm. कि इसकी demand है या नहीं है, Right. because हर चीज की reach वगैरह भी unfortunately it's बदल not the जाएगा। same as it used to be earlier. So yeah, I think testing the water first and then going ahead or taking it slow if you can afford to take it slow, and just enjoying the process, learning from it, and जित उतना आप एक अपने आप के लिए टारगेट सेट करो जितने आप बर्नआउट भी नहीं हो रहे बट एक तरह से एक्सिलरेट भी अपने आप को करके रह रहे हो. इट्स अ टफ like balance to strike, but it is attainable. So would be that would be my advice. Yeah. Amazing. I also love, Aiza, that आपकी जो बिजनेस एडवाइस थी ना वो एक्चुअली लाइफ एडवाइस भी है, क्योंकि आपने ये कहा कि भाई यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी। दैट आल्सो अप्लाइज टू इवन Yeah. एटायर एंड लिबास Yeah. एंड एवरीथिंग, कि भाई कभी भी आप Yeah. हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि आप वही कर लें जो आपका आपका दिल चाहता Yeah. है। एज Yeah. एज पार्टिंग वर्ड्स, आयजा, आप उन खवातीन को क्या कहना चाहेंगी जो दूसरी खवातीन के लिबास को पुलिस करती हैं? जो दूसरे खवातीन के लिबास को पुलिस करती है, आप अपने काम से काम रखें, और मतलब अगर आपको नहीं किसी का लिबास पसंद तो आप कहीं और देखें. I don't know. Like literally, like it's not your business what somebody else is wearing. Uh, it's their body, it's their choice, it's their everything. आपकी पास उनकी मतलब you are not the judge of their character, their morals, their religion, any of that. हम्म। So we should stop policing others के ये, और especially हर लोगों को लगता है कि उनकी responsibility बनती है हम्म। कि जी हमें तो हमारा फर्ज है बताना उस बंदे को, स्पेशली इफ दैट पर्सन इज एन एडल्ट वुड नो फॉर श्योर, और अगर नहीं भी एडल्ट है तो आपको किसी और के बच्चे को कुछ कहने का कोई कोई राइट नहीं बनता. तो एंड इट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन पीपल. इट्स नॉट लाइक वो बड़े होकर एकदम से खुद ही सही हो जाएगा. इट विल टेक years to come out of that. So you don't know what you're doing to the other person. Your little comment could stay with them for years. It could shatter their confidence completely. तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दैट. और जेन्युइनली अगर आपको मसला है तो फिर आप अपने अंदर अपने गिरेबान में झांकें कि आपको इस चीज से मसला क्यों है. और बाहर जाकर बाहर के मुल्कों में जाकर तो फिर आपको आपकी जरूरत नहीं होती किसी और को कुछ कहने की. जजमेंट कॉल आप करेंगे मगर फिर आप अपने अपने तक ही रखेंगे मोस्ट लाइकली. यहाँ तो आप मतलब अगर किसी को बोलेंगे नहीं तो उसको मतलब तार तार करिए उसको, बस उसको इतना शेम कर देंगे कि वो पता नहीं उसको लगेगा कि शायद I'm not हाँ wearing anything हाँ even if हाँ they're wearing whatever. हाँ। So it's just not your business, it's not your place, and it's about time that we learned this, that I think दुनिया में we are ranked as the worst, like one of the worst places for women, and women। especially in terms of how we dress. कि हमें कहा जाता है, और ड्रेस क्या मतलब आप औरत नजर ही आ जाए चाहे उसने बिल्कुल। जस्ट बस औरत ही हो तो वो तो उसको औरत औरत को नहीं छोड़ती. और आदमी तो फिर क्या ही वो कहें। अलग है, क्या ही हाँ कहें. तो एटलीस्ट लाइक एज वुमेन we should support one another. किसी का ये नहीं होता कि उसने if someone is wearing shorts and another person is in an abaya, that's not, there's no rule that says that those two can't be friends. Your friendship is not based on what you're wearing or how you look. It's something that they choose for themselves. Look beyond that. Look beyond it. I think as a society it's very important for us to grow beyond people's clothes. There's better things to do. There's more that needs to be done. So let's focus on that. Amazing. Thank you so much, Aida. Thank you so much. आपने, Yeah. I mean, this is great, very important, and thank you so much Yeah. for taking out all of your time. Oh, my pleasure. Thank you Uh, so much for having me. Thank you. Really, it's been a really exhilarating conversation that we've had, and I'm grateful that you had me on this podcast. And yeah, thank you so much.